So happening this kind of similar activity in India was a big thing for us. Hi, my name is Saurabh Thapa. I am the CrossFit coach certified and certified in nutrition and fitness science also. I've been the owner of CrossFit Box for the last 3 years and into fitness close to 22-23 years now. So I have full of emotions for this box. Reason being, when I was in engineering, I used to do bodybuilding. After that corporate job, again bodybuilding जितना हो पाया जॉब में जितना अलाउ करा, उसके बाद से अपने बिजनेस वगैरह में बिजी हो गए, कभी टाइम ही नहीं मिल पाया. But COVID was kind of a big call for me. By COVID, one of the partners' fathers passed away, so this box was in the verge of closing. Somehow, it was my call, I think. Destiny was supposed to bring me from the mountains to here, and I came here for my own fitness. And somehow Nakshatra changed and I became the owner of this box. We have always seen this activity or kind of similar activities on YouTube only, or have searched about this on Google. So happening this kind of similar activity in India was a big thing for us, and we participated in a number of 11. And we were all very happy with the kind of arrangement, the kind of challenges we have faced there. And one was the big major learning for all of us, and that was the endurance part. We were too good for all the challenges, but we were heavily lacking in one thing called running. और हर रनिंग के बाद हर क्रैम्प हमने बस क्रैम्प हुए हैं और हमने हाथ ऐसी पकड़ा है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ. मुझे सबसे अच्छा ये लगता है पर्सनली व्हाट आई हैव सीन विद द योद्धा रेस दैट वन ऑफ माय सीनियर फ्रेंड ही इज 49 नाउ. And at the age of 49, he participated in the Yodha and I was the partner with him. What he was able to do at the age of 49 can't be done by a normal fit man at the age of 30 also, what he was doing at the age of 49. See, I tell you, if you are particularly preparing for Yodha race, so I would tell you can do 5 to 6 rounds of lunges with close to 25 kg or 30 kgs of kettlebells or the dumbbells if you can carry. Then we carry 32 kg each, which makes it 64 kg for the farmers carry, and that again 3 rounds. After that, we focus on 150 wall shots, and after that we are focusing on basically on the strength part. So you have to increase your strength part, and that can be increased with the thrusters. So thruster is one exercise which is famous in the entire world. Fruits, again, अपने based on आपका goal क्या है. If you are into calorie deficit, please don't go for much fruits. देख लो आपके फाइबर को बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको कैलोरी अपनी हमेशा काउंट करते रहनी है. फॉर अ पर्सन हु इज इनटू लीनर बॉडी हैज टू गो फॉर द हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्लस कार्ब्स और फैट उसको थोड़े देख के खाने पड़ेंगे. आपका बॉडी वेट अब क्लोज टू 60-70 के आसपास. आई थिंक यू कैन गो विद द 6 to 8 eggs. चीला प्लीज़ खाओ कैसे भी करके, बहुत अच्छा है, फाइबर से भरा हुआ है, प्रोटीन बहुत अच्छा भरा हुआ है. ब्रोकली मिल जाए, अभी गर्मी आ गई है, हरे पत्ते नहीं आ रहे, नहीं तो मैं सबको बोलता हूँ भाई पत्ते वाली सब्जी खाओ, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और आयरन बहुत तगड़ा मिलता है बॉडी के लिए. एंड येस, अपनी वेजीज के लेवल को आप दाल के साथ कंपोनेंट बढ़ा के सैलेड में ऐड ऑन कर लो. व्हाट आई डू, माय वाइफ हैज़ लॉट ऑफ रेसिपीज ऑफ चिकन, सो हम तो सिर्फ रात को चिकन ही खाते हैं. 7 में से 5 से 6 दिन चिकन ही खाते हैं हम रात को. नो रोटी, नो राइस, ओनली सैलेड एंड चिकन. So always take a 1 hour gap, and in that 1 hour please do a proper warm up because it is going to help you out. Body अच्छे से खुली होगी तो आपके movement, posture, mobility बहुत अच्छी आएगी, तो आपको जो रेंज ऑफ मोशन आता है किसी भी वर्कआउट का वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं जल्दी आएंगे. बट 1 घंटा पहले नहीं, करीबन 1.5 घंटा पहले आप इजी कार्ब्स खा लो. एंड ऑलवेज विद योर ट्रेनिंग, बिफोर ट्रेनिंग एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ORS प्लेन वाला छोटा सैशे आता है, एक ऐड ऑन करो. Personally, I am going to minimize my time frame of at least by 15 minutes because I am going to train better for my running part. I'm very good with the training part, yes, but I am going to improve on my training on the running part. So yeah, those 15 minutes can be covered very easily.